Hi guys, so if you're here, if you're watching this, that means you probably are interested to know more about my credentials, who I am, who is Anupam Mishra. So yeah, here we go. Anupam Mishra, I'm a graduate and an alumnus of IIM Lucknow, Indian Institute of Management Lucknow. I've worked in the past with brands such as Disney plus Hotstar, Star Bharat, Apollo Tires, with other organizations as a third-party contributor such as UNICEF, MOHFW, UNAIDS, etc. And obviously, I've also been an educator on an academy, right? So that's about my working profile. And now about my coaching credentials, guys. I'm a former Unacademy educator, recognized while I was on the platform by the Johnny Ivy Award for the best course design and setup. And yeah, arguably considered as the best VRC educator that they had, as you might find from some of the uh, really good reviews that my kind students have given me. And 3 million watch minutes, 97% class rating, 4.8 by 5 stars, average review मेरे courses का platform पे वहाँ. And before, in fact, before an academy, like an academy was not the first time I ever taught. I worked before that with IMSC and other institutes. That these are like, this is before my B school stint. मैंने खुद बी स्कूल की एजुकेशन खत्म किया, उससे पहले के ये एक्सपीरियंसेस हैं. एंड दीज आर माय कैट स्कोर्स. या ओवरऑल वीआरसी, क्यू एंड DILR, राइट. इनके जख्म मेरे अभी भी नहीं भरे हैं. सो ऑल्दो इन लेटर ईयर्स आई हैव गॉटन बेटर परसेंटाइल्स इन these. So but still, yeah, so that's about my scores. These are my coaching credentials. That's about me. So guys, I told you about my credentials. Now see, I don't believe that मैंने आपको जो भी credentials बताए ना, वो जानने ज़रूरी हैं आपके लिए. I understand from a student's perspective, but I don't believe that my greatest advantage comes from those credentials. Well, they do serve as an advantage. उससे मेरे को कुछ तो फायदा होता है as a coach, but they're not my greatest advantages because see, there are n number of people who have worked with brands as good as these, and there are n number of people who have, thousands of people graduate from IIMs every year, right? Doesn't make them a great coach necessarily. हो सकता है काफ़ी केस में हो भी, पर काफ़ी केस में नहीं भी हो, ज़रूरी नहीं है. और जस्ट बिकॉज आपने अच्छे ब्रांड्स में काम किया तो आप अच्छे कोच हो, वो भी ज़रूरी नहीं है. और ना ही just because you've gotten some reasonably good scores in CAT doesn't make you a great coach. I don't believe that any of these are my greatest advantages as a coach. Not that they are not useful. मैं मानता हूँ कि इनसे फर्क काफ़ी पड़ेगा. I've uh, I'm actually someone who has been through the whole cycle, of appearing for CAT, getting a good score, getting into a good college, and then working in the corporate sector. And in fact, even currently I take up consulting assignments in the corporate sector. तो ये सारी चीजें तो हैं ही, but so these are advantages, but I don't believe they are the greatest advantages. And I'll tell you what. I'll tell you what, in fact, are the greatest advantages I believe I have. Okay. The first greatest advantage that I have as a coach is that I understand the student psyche. ये जो पूरी जिद्दोजहद आपकी शुरू होती है ना थर्ड ईयर से, आपके सेमी प्री फाइनल ईयर से, आपके इंजीनियरिंग में थर्ड ईयर होता है, बाकी ग्रेजुएशन स्ट्रीम्स में आई थिंक सेकेंड ईयर होगा. प्री फाइनल ईयर से आपकी जो ये पूरा स्ट्रगल शुरू होता है, क्योंकि GRE दिया जाए या फिर GMAT दिया जाए या GATE दिया जाए या CAT दिया जाए और मे बी सम अदर एग्जाम. And then you maybe zero in on one of the exams ki haan theek hai, let's go for CAT. And then you start, okay, how do you prepare for CAT? You start looking for institutes, and then again, like उसमें बीच साथ में ये भी चीज़ें चल रही होती है कि प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सी कंपनी में जाना है कि नहीं जाना है, what kind of profile should you be looking for, right? Because वो जो पूरा फेज है ना, it's a बहुत ही ट्रांजिशन वाला फेज है. लाइक अंडर ग्रेड तक तो चीज़ें सब कुछ लाइट रहती हैं कि हाँ ठीक है, मे बी यू वर फोकसिंग ऑन अकेडमिक्स, मे बी यू आर नॉट, लॉट थिंग्स वर गोइंग ऑन, लाइक ठीक है, तब तक लाइफ एकदम चिल चल रही थी. उसके बाद फिर होता है कि लाइक नाउ लेट्स वी नीड टू, वी आर लुकिंग फॉर, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, राइट? सो ये जो पूरा साइकिल है ना, ये पूरा जो साइकिल है, इससे मैं गुजर चुका हूँ. I've committed all, like many mistakes to a good extent that a typical student will have committed. And then I've fallen down, I've bounced back, I've gone on to get a good percentile. ये पूरा cycle मैंने खत्म किया है. And I know that it's not necessarily an easy situation. I'm not saying that you have the most difficult, it's the most difficult thing that you're doing in the world. Like आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ आज रखी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, but at the same time it's not the most simplest of scenarios to be in or situations to be in. So I know the whole cycle. मैं पूरा चीज़ जानता हूँ ये क्या क्या होता है इसमें.
So and not just in terms of on a motivational ground, but also on the grounds of preparation. कि preparation में कौन सी चीज़ें important है, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और कौन सी चीज़ों पे उतना ध्यान देना ज़ाया करना अच्छा नहीं है, right? And which brings me to the second point, which is again I believe one of my greatest advantages, that I know how to help you solve the hard problems of test preparation. आप एक बार टेस्ट प्रेप में जाके कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी प्लेटफॉर्म पे एक बार आप जाइए, आपको वीडियोस, क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, ऑफलाइन ऑनलाइन, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पे आपको एक एक करके आपको चैप्टर समझाए जा रहे हैं, एक एक करके आपको सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं, एक एक करके आपको आरसी सॉल्व कराए जा रहे हैं. एंड आई एम नॉट थिंक दैट दे आर यूजलेस. इनकी खुद की एक जगह है ऑब्वियसली, एंड इनफैक्ट दे आर रिक्वायर्ड. इनके बिना काम नहीं चलेगा. आपको बेसिक्स और बेसिक चीज़ें कवर करनी है. बट आई स्टिल बिलीव दैट अभी ये जो आपकी टेस्ट प्रेप इंडस्ट्री में एटलीस्ट कैट तक मैंने चीज़ें देखी हैं, बाकी भी अभी आई स्टिल हैव टू एक्सप्लोर. I don't believe that they have solved what I believe are the hard problems of test prep. Okay, what are the hard problems? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. आपको DILR में आपने हर जगह सुना होगा कि पीपल टेल यू कि नहीं यार, सेट सॉल्व करने से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सेट का सिलेक्शन, हाउ यू सिलेक्ट द सेट इज वे वे मोर इंपॉर्टेंट. एंड दैट्स व्हाई देयर आर टेंस ऑफ वीडियोस दैट यू गेट व्हिच वेयर पीपल विल टॉक अबाउट कि नो, सिलेक्शन मैटर्स अ लॉट. बट द थिंग इज दैट्स वेयर दे स्टॉप. जब बात ये आती है कि अच्छा सिलेक्ट कैसे किया जाए, तब वहां पे एडवाइस ये आ जाता है कि वंस यू सॉल्व मोर देन 250 300 सेट्स से प्लस, अब जब आप सॉल्व करने लग जाएंगे आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा, विच इज अगेन फेयर. मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत चीज है, ये सही बात है, ये दैट्स ट्रू, यू विल गेट अ सेंस ऑफ इट. बट व्हाट इफ समवन कुड प्रोवाइड maybe a kind of a framework, थोड़ा कुछ हद तक एक और भी ज्यादा टारगेटेड इनपुट अगर कोई दे पाए स्पेसिफिक्स में कि ओके दीज आर द आइटम्स दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर व्हाइल सिलेक्टिंग, दैट वुड बी रियली गुड, राइट? एंड समथिंग दैट वुड अप्लाई टू ऑलमोस्ट लाइक जो कि आप काफी सारे अलग अलग सेट्स में आप सिचुएशन में अप्लाई कर पाओ. That is just one of the hard problems. Another hard problem is like I often get this query about आपने जनवरी फरवरी मार्च से लेकर आपने जुलाई अगस्त तक तैयारी की, और उसके बाद when you start solving questions in the mocks तो आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं. आपने जब चैप्टर वाइज प्रिपरेशन किया तब तो आपकी सारी तैयारी हो रही थी, तब सब कुछ चीजें आ जा रही थी. द प्रॉब्लम ऑफ रिविजन बेसिकली, राइट? वहां पे भी जनरली द आंसर्स दैट यू गेट इज लाइक हाँ ठीक है, उसको वापस रिवाइज करो, नोट्स बना के रखो, लाइक बी रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स इट, लाइक एवरी वंस इन अ व्हाइल कीप गोइंग थ्रू इट वंस, एक एक बार देखते रहें उसको. आई डोंट थिंक दोज आर लाइक सॉल्यूशंस व्हिच actually address the core issues there. And then the core issues are the hard problems, like how do you get a student into a position jahan pe he doesn't necessarily have to rely on revision so much, because this is an aptitude exam guys. ये aptitude exam है आपका, ये आपका syllabus वाला exam नहीं है कि इसमें एक एक चीजें आपने ये याद करके रखी है कि नहीं, ये याद करके रखी है नहीं, आप पूरा लिस्ट बना के सोच के रख के याद करके जाओगे फॉर्मूलाज का, ट्रिक्स का, मेथड्स का. सो ये जो रिविजन वाला, ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ बस. कुछ ऐसे बहुत सारे हार्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि एड्रेस नहीं हुए हैं. फॉर एग्जांपल आरसीज और वीआरसी के सेक्शन में देख लीजिए, देयर आर ऑल द इनपुट्स दैट यू गेट आर लाइक सरफेस लेवल इनपुट्स. कीप रीडिंग आर्टिकल्स फ्रॉम 4-5 सोर्सेज दे देंगे, आर्टिकल्स शेयर होते रहेंगे बस. एंड देन लाइक अगेन एक बात मेरी समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीजें की जा रही हैं वो गलत हैं, मैं ये कह रहा हूँ दैट दे आर लिमिटेड, कि उनका वैल्यू जो है ना वो डिलीवर कर रहे हैं, वो उससे कहीं ज्यादा वैल्यू डिलीवर हो सकता है. They don't address the hard problems. They don't address the problems कि यार स्टूडेंट को बस बोल दिया कि हर हफ्ते आपको 5-5 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है, उससे कुछ फायदा होगा. बट हाउ डू वी इंश्योर, कैन वी नॉट इंश्योर कि उसको अलग अलग जितने भी एरियाज हैं, जो भी मेन आइडियाज हैं, उनमें से कंटेंट पढ़ाया जाए? कैन वी नॉट, राइट? सो बहुत सारे तरीके हैं इनको एड्रेस करने के जो कि दे आर नॉट देयर इन द टेस्ट प्रेप इंडस्ट्री, एटलीस्ट सो फार एज माई जजमेंट इज कंसर्न. ठीक है, तो या सो एंड लाइक you're told how did you have to read, not many times are you told how to read. ज्यादा से ज्यादा आपको बस ये बताया होगा कि हर पैराग्राफ का समरी निकाल लो. That's the extent that we go to. There is way more to an RC than that. Okay, and उसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे हम लोग पूरा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करा देंगे इंग्लिश में, या इंग्लिश में मेजर कर लोगे, आप मैथ्स में मेजर कर लोगे. ये ऐसा कुछ भी नहीं है. उसमें बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो बताई जा सकती हैं, कराई जा सकती हैं, which will help solve these hard problems, but they are not being addressed in the test prep industry. And that is what I believe, knowing how to help you solve those hard problems is what I believe is my greatest advantage as a coach. Knowing your psyche, knowing the things that you're going through, and the motivational ups and downs that you will go through, and helping you through them,
is what I believe is my greatest advantage as a coach. Not just this, ये तो चीज़ें बहुत सारे लोगों के पास पड़ी हैं, ठीक है. So yeah, I'll leave you finally guys with मैंने जो भी पुराने प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे मैं कोर्सेज लेता था वहाँ पे आपको फिर भी थोड़े आप रिव्यूज़ देखेंगे तो आपको और भी आइडिया आएगा कि how kind my students have been, and these reviews really mean a lot to me. You know, they make all the time that I've spent in the, coaching quite meaningful. तो मैं काफ़ी वैल्यू करता हूँ इनको. तो आप अगले so the way we'll go about this is कि अगले every 5 to 7 seconds the page will change. आप पॉज करके अगर आप चाहें तो रिव्यू रीड कर सकते हैं या फिर आप स्किप कर करके आगे के रिव्यूज देख सकते हैं. These were from my time as an educator on the Unacademy platform. As on the date जब ये publish हो रहा है वीडियो तब मैं नहीं हूँ वहाँ पे. So that's about it, and thanks again guys. ये जितने भी students हैं अगर आप ये लोग देख रहे हैं guys, thanks a ton. These reviews, I don't think I can emphasize it enough how much they matter to me. Okay, so great times while preparing for you, and hope you're all doing great. And जो लोग अभी कुछ साथ में हैं, definitely हम लोग इसको चीज़ों को अच्छे से will bring a wonderful ending to this. Okay, so yeah, so that's about it. You guys can carry on and watch the reviews, and that's about it guys. Thank you.